Hello, welcome back to another stream of Genshin Impact. Let's go. ओ भाई Gotcha. The wind knows me. My apologies. Yeah. Scatter. Spring forth. Quietly now. One with nature. Bro, I am here. Hello, sniper. अच्छा, selfie sniper gaming. Welcome to stream. What's up? क्या हाल चाल? The wind knows me. Do, do, Time to go. do. Did you knows क्या? Me. Like, yeah, I mean, अब देखते हो मेरे पोकेमॉन के वीडियो क्यों नहीं जानता भाई मैं. मेरे को पहचाना, फिर से नाम चेंज कर लिया क्या किसी ने भाई? टू टू. Clear weather all around brightens the heart. Clear weather all around brightens the heart, हाँ? ठीक है ठीक है. So you are like a bard from Monster, storyteller from Luve.
आई कैन हेल्प या, ये तो स्टोरी टेलर है भाई. सो वी डिड हैव दिस एडवेंचर इन इनाजुमा. ओ मॉन्स्टेड का ही बताएंगे भाई. हाँ भाई, कैथेड्रल में भी स्नीक इन किया था हमने. अभी इसकी स्टोरी सुनने भी जाना पड़ेगा ना, आई गेस जाना पड़ेगा. या मैन, वेट करके जाना पड़ेगा बे. नेक्स्ट इवनिंग 1921. नेक्स्ट इवनिंग बोला है, आज की तो नहीं होगी शायद. या मैन, कल की है. और वेट करना पड़ेगा रे बाप. एंड देयर वी गो. एंटर द कैफे. भाई आज के लिए इतना ही. स्टोरी खत्म होगी भाई. Done with the commissions. Add Astro. Thank you for Add Astro. Would you care to? If you ever have.
Time to go. Cheer. Troublesome. Take it easy. Suffocate. Time to go. Take it easy. Take it easy.
यो नीलत तू फिर आ गया है। सुवजित गोस वेलकम टू स्ट्रीम व्हाट्सएप। तू भी फिर आ गया। Time to go. क्या हाल है बताओ। Time to go. Time to go. और भाई आज कैसा है बताओ। पता नहीं क्यों चैट कर रहा था, देख नहीं रही है जी। क्यों भाई, ऐसा कैसे भाई, पता नहीं। रेमोस अर्जेंटीना या मैन, लेट्स गो भाई। कल मैं स्ट्रीम बंद करके गया, फिर क्या ही बवाल हुआ है भाई मैच में। मैंने कहा फुल टाइम पे मैं गया हूँ भाई देखने। हाँ ना भाई, क्या बवाल मैच थी भाई, मजा आ गया। ए जे सर वेलकम टू स्ट्रीम व्हाट्सएप। रेमोस अर्जेंटीना या मैन, लेट्स गो फाइनली। भाई क्या मैच थी भाई, क्या मैच थी भाई। आज एजे का फेवरेट मीम, अरे यार याद दिला दिया क्या। आई ऑलमोस्ट गॉट हार्ट अटैक। हाँ भाई प्रो कुछ भी मैच था भाई। लाइक एम्बाप्पे ने जो गोल डाले भाई 80 और 81 पे भाई, तो 1 मिनट में 2 गोल डाल दिए भाई उसने। माय गॉड, एम्बाप्पे भाई फुल ट्राई हार्ड किया पता है, बहुत अच्छा खेला भाई वो भी। जिन्होंने नहीं देखा वैसे 1 मिलियन पॉइंट्स मैच। हाँ आई न्यू इट कमिंग ब्रो, कुछ भी खेला है भाई वो। आई एम बाप पे जॉर्ड लॉल। ए ब्लेकी वेलकम टू स्ट्रीम व्हाट्सएप। ब्लेकी यार कुछ करते हैं यार, चलो आओ आओ हम मारते उसको, सीनियरा को मारते चलो। मेरे को मारना है, फ्री हो क्या। आर आई पी एम्बाप्पे नेम। हाँ ना भाई, इम्बाम्बे। अभी नहीं भाई, फार्म करने दो पहले, बाद में बीटीएस भाई। आता हूँ रू, नहीं अभी नहीं, ये आर्टिफैक्ट फार्म कर लूँ उसके बाद। आफ्टर दैट पेनल्टी दे गोट मोटिवेशन फॉर एन अनदर। अरे हाँ ना भाई, और उसके बाद एक और पेनल्टी खाई भाई। उसने जो हाथ हटाया था भाई, तीसरा गोल भी खा लिया भाई। मेसी ने जो गोल डाला मैं तो खुश हो गया, मैं कहता नाइस, एक्स्ट्रा टाइम पे मेसी ने गोल डाल दिया भाई। और उसके 2-3 मिनट बाद फिर से हाथ डाल दिया भाई, बीच में फिर से पेनल्टी खाई। सच्चा ये क्या चल रहा है बे। और फिर एक्स्ट्रा टाइम के लास्ट 2 मिनट पे उसने जो रोका है भाई मार्टिनेज ने गोल, ओ माय गॉड। थोड़ी देर के लिए वो मुंह में था, ऐसा हो गया मेरे साथ। हाथ वाला पेनल्टी नहीं होना था टू बी ऑनेस्ट, नहीं उसने हाथ हटाया था भाई। लाइक जब भी डिफेंड कर रहे हो तभी उन लोगों को हाथ पीछे रख के करना होता है, और उसने फुल्ली ऐसे हाथ आगे किया था भाई, तो वो उनका वही था भाई, गलती था। मेसी तो जाने आयन लॉबी में स्मर्क करतो एम गोल करतो। अर्जेंटीना सब्स्टिट्यूशन हैड द बिग रोल ब्रो, पर जब जब से डी मरेया उसको सब्स्टिट्यूट किया ना, तब से उनकी जी लग गई भाई। उसको नहीं करना था सब्स्टिट्यूट, सीमलेस। ब्रो मेसी इतनी उम्र में भी जो ड्रिबल करता है ना भाई, 2-3 बंदों को ललचा देता है, मजा आता है भाई। मेसी भाई ओपी। ड्रिबल और जो प्ले बनाता है ना भाई, वो जो पास करता है भाई, एकदम इजी रहता है उसके टीममेट के लिए फिर गोल डालना।
यार पर उस मार्टिनेज ने भी भाई पूरी टूर्नामेंट जो गोलकीपिंग किया ना भाई, मजा आ गया। वेरी वेल गोलकीपिंग, वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेरी। और नेदरलैंड के सामने भी पेनल्टी में उसने रोका था, इसमें भी रोका भाई। वेल्ड 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 वेल्डन जैसा हो गया था भाई। दैट गाय फ्लाई, हाँ ना भाई। ऐसा ऐसा आ गया भाई कल तो, जो चिल्लाए हम घर पे। बहुत ही तगड़ी मैच थी भाई। वन ऑफ द बेस्ट मैच भाई जो मैंने अभी तक देखी है। मेसी द गोट या मैन। प्रो पर एम्बाप्पे भी भाई, फाइनल में हैट्रिक डालना मतलब क्या भाई, कुछ भी खेला है भाई बंदा। फुल ट्रायड किया भाई बंदे ने भाई, हेड्स ऑफ। मैंने सोचा भाई तू 24 लेवल बोल रहा हूँ, 24 ईयर्स का भाई, तेरे को भी और बहुत सारी फीफा जीतने भाई। मेसी का लास्ट है यार, उसको जीत जाने दे भाई। ने बोला नहीं, फिर भी भाई इवेंचुअली दैट वाज मेसीज डे। ऑल्सो सर कैन यू रिमूव द मीम, अरे हाँ यार भूल गया, रुको रुको, वो लगाया था फिर हल्का सा रह गया यार। चला गया क्या? नहीं गया, नहीं गया, चला गया, गया गया, ठीक ठीक। जैनी तो भाई वेलो पूछ रहे, पैकेट लॉस आ रहा है तगड़ा वाला, आज मैं वेलो ही खेलने वाला था पता है। आज वेलो की स्ट्रीम ही करने वाला था मैं, पर जो पैकेट लॉस आया भाई, सोचा जाने तो भाई। नेवर। दो पेनल्टी दो, हाँ ना, दो पेनल्टी डाले थे पर फिर भी हैट्रिक तो हैट्रिक ही होता है। गया ना यार, क्योंकि आज मैं वो खोल के नहीं बैठा हूँ स्ट्रीम लैब्स, हाँ गया गया। ऐसे आप लोगों को क्या लगता है कितना डिले है स्ट्रीम पे? आई डोंट थिंक सो ज्यादा होगा, 2-3 सेकंड का होगा शायद, उससे ज्यादा नहीं होगा। Enough. Feeling lucky today? Come on, you coward. पेनल्टी है 70% चांस ऑफ स्कोरिंग, या मैन। पर फिर भी वो मार्टिनेज कोई एरा गैरा गोलकीपर थोड़ी ना है, उसने कितने सारे पेनल्टी रोके। हेलो इची को दादा, वेलकम टू स्ट्रीम, व्हाट्सएप, हेलो क्या हाल है? दैट्स द पॉइंट या।
हाउ मेनी 5 स्टार डू यू हैव कैरेक्टर्स? 5 स्टार कैरेक्टर ज्यादा तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6। अगर इसको हटा दे तो 5 है भाई, और इसको रखे तो 6। मेरे पास इतने कैरेक्टर्स ही नहीं है यार। Feeling lucky today? टुडुन टु टुडुडुडुन। लेट्स गो। You are not welcome here. ओ 10,000 नाइस। Into the wind. Fallen leaves. Adorn my kings up. Sun's over. I'm getting sick right. यू कैन गेट मोर 5 स्टार इफ यू स्टॉप सिंपिंग फॉर राइडन। बात तो सही है, 100% सच बात है ये। मेरे को भी कल यही सपना आया था, लाइक कि अगर मैं राइडन के लिए सेव नहीं कर रहा होता तो अभी तक मेरे पास कितने सारे 5 स्टार रहते। क्या ही कर सकते हैं भाई। गेंशिन में न्यू टीसीजी वाला मोड आया है, प्ले दैट, या आज खेलेंगे भाई उसको भी, डोंट वरी। इवेंट भी आ चुकी है आई गेस आज की, या मैन तो थर्ड राउंड वो भी कंप्लीट करेंगे। बहुत सारा काम है बे। मेरे को आया का कार्ड चाहिए भाई उसमें, तो वो भी थोड़ा सा ग्राइंड तो करना है यार। ऑफ स्ट्रीम तो लाइक खेलता ही नहीं हूँ मैं, टाइम ही नहीं मिलता। नीलज ने कल स्कैरा पुल करा था, याद मत कराओ भाई। कल का जो सीन हुआ है ना भाई, याद मत कराओ। मैं 2 घंटे तक रोया था नीचे जाके। Wind knows me. हाँ वो अच्छा याद दिलाया, वो वेपन को भी अपग्रेड करना है भाई। अभी हेजो को पकड़ा देंगे और क्या। और अभी अभी इसमें हेजो यूज होगा लगता है। ये कई कई बार ऊपर रहती है, कई कई बार नहीं रहती है। क्या है इसका सीन? मंडे को ही रहती है क्या? इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर थी ना। टुडे आई वॉज एट माई एग्जाम एंड आई एम counting how many primos I'll get if I do dailies for a year. Lol. और कैसी रही एग्जाम? हीजू पर बेकार है, स्कैरा ले लेना है। हीजू पे अच्छा है, याइमिको पे अच्छा है, एंड निंगवांग पे अच्छा है। तो आई कैन बिल्ड निंगवांग आई गेस। टीपीएस निंगवांग बनाएंगे भाई। अभी इसमें यूज नहीं होगी ऑब्वियसली, पर ओपन वर्ल्ड में यूज हो जाएगी शायद, या तो फिर हीजू को पे पकड़ा देंगे और क्या। और तो कुछ कर नहीं सकते भाई। यही दुख दर्द पीड़ा हो गई कल तो। यार मिको पे अच्छा ही है। किसने बोला? किसी ने बोला नहीं भाई, मैं सोच रहा था, मतलब बोला तो किसी ने नहीं भाई। वेपन ही ऐसा बनाया है ये तो स्कैरा के अलावा किसी पे चलेगा नहीं भाई। नाइट बोट कब एबल किया? नाइट बोट तो कब से एबल है। कर ले निंगवांग बिल्ड इस वाली, अभी इसमें वो कुत्ता है उसके लिए। हाँ पर निंगवांग बिल्ड में बात यह है कि मेरे को बहुत सारा फार्म करना पड़ेगा रे पाप। ऐसे मेरी निंगवांग C4 है, C6 होती तो बिना सोचे मैं पुल कर लेता, अरे सॉरी बिल्ड कर लेता, पर बहुत टाइम लगेगा रे पाप। तो अभी के लिए वेपन बिल्ड करेगा नल्ला है यहाँ पे तो करो ना।
अरे यार कब करूँ यार, आर्टिफैक्ट्स ही नहीं है मेरे पास। तो सोच रहा हूँ 4 पीस नोब्लेस पकड़ा दूं भाई। वैसे निंगवांग को ले तो जाना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसको तो पकड़ाएंगे इसके लिए। Time to broaden our टीचर लाइक व्हाट द एफ आई एम डूइंग इन माय क्वेश्चन पेपर। लुल। तो फिर आंसर्स लिखे या सिर्फ यही किया भाई? हेलो। नोब्लेस निंगवांग पे ये कब किया सुनना पड़ रहा है। अरे भाई अभी इसके लिए भाई क्या ही करे भाई, नहीं है भाई, कुछ नहीं है तो कुछ तो सही भाई। Into the wind. यार ये इसका यही प्रॉब्लम है भाई, Things are about to नाहिडा का। फिर मैं नाहिडा को भी पकड़ा सकता हूँ वैसे तो, क्योंकि मैं तो ऑन फील्ड नाहिडा यूज करता हूँ। Patience. तो आई गेस आई कैन यूज ऑन नाहिडा टू। My apologies. Everyone okay? quietly now. One with nature. क्या कर रहा है बे, मरता क्यों नहीं है? 10,000 विदाउट क्रेट, व्हाट द हेक। Meet again. 2 पीस जियो 2 पीस अटैक दे निंगवांग पे। अरे जियो नहीं है भाई, कहाँ से लाऊं, पैदा करके लाऊं भाई। जियो फार्म ही नहीं किया कभी जिंदगी में, सोचा नहीं था जियो कैरेक्टर बिल्ड करूंगा मैं। ये देखो जियो दिख रहा है कहीं पे, दिख रहा है दिख रहा है, पे है ही नहीं भाई। जिंदगी में फार्म नहीं किया जियो कभी। नानीडा पे भी बेकार है, तू चुप रहे। अरे भाई तो कहीं पे तो यूज करना पड़ेगा ना, क्या ही करूं भाई, उसका क्रिट डैमेज यूज कर देंगे और क्या। ब्रो यूज स्ट्रीमलैब्स, ही लाइक नाइटबॉट बट बेटर देन नाइटबॉट। मतलब स्ट्रीमलैब्स एलिमेंट ना, एलिमेंट यूज करना है पर अभी के लिए ठीक है, मतलब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी चैट ऑलवेज डेड पड़ी रहती है। ये सुवजीत एक तरह बकवास करते रहता है। 10-year-old गर्ल लुकिंग एट मी डूइंग एक्सट्रीम कैलकुलेशंस। स्कारा ले ले, टाइम है ना। स्कैरा भाई लेंगे रीरन पे और क्या। एफबीआई ओपन अप क्यों भाई? अरे फिर से चल मैं जा रहा फिर। अरे मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था। आई एम जोकिंग, ऐसा कर रहा था मैं, जोकिंग। Time to go to work. वाह भाई, इसको इग्नोर करके जो इस तरफ पे मुड़ी है ये। अरे भाई बस कर भाई, कितना मारेगा। Make yourselves at home. Game's up. Fun's over. कितने एचपी दिए इस गधे को। Now you're testing my patience. The wind knows me. Busted. We'll meet again. नाहिदा ठिल गई भाई। कब आना है सिन्योरा मारने? ये बस ये लास्ट ये सॉरी भूल गया था हल्का सा। ये कमीशन कंप्लीट कर तू हल्के से, दो तीन मिनट। मैं भी अब से वीकली करूंगा। नाइस, देखा देखा कैसे इंस्पायर होते हैं लोग मेरी स्ट्रीम देख के, देख रहे हो ब्रो। डू अ 10 पुल। नाइस भाई, 50 पीटी पे जस्ट सेइंग, गलती से भी आ गया ना रो दूंगा। इम्यून टू पायरो, हाँ ठीक है। पर वीक 3 ही करूंगा है जी। वीकली या डेली? वीकली। बॉसेस की बात कर रहे क्या? In the name of the princessin. बारबरा को पकड़ा दूं क्या मैं? उसका वेपन टीपीएस बारबरा बनाऊंगा फुल। क्या बोलते हो? एकदम वाहियात आइडिया है ना, मेरे को पता था। तो गाइस ऐसे वाहियात आइडिया के लिए देख
मिलना लाइक इससे वाहियात आइडिया पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, समझ रहे हो? Quietly now. By royal let's dance. Here comes the cash. इफ इट वुड बी ए चीची देन यू विल गेट गारंटीड 50-50, और अगर नहीं निकली तो यू नीड अ हॉस्पिटल। हाँ ना, अरे अब तो टोटल 7 वीकली हो गए ना। हाँ मतलब बॉसेस की बात कर रहे हैं ना, मैं तो भाई एक बहुत मारता हूँ पूरे वीक में, पता है सीनियोरा को सिर्फ उसके वाला कई बार इज्जा को पेल देता बस, उसके अलावा कुछ नहीं मारता भाई मैं। पेरिस तब तो नहीं करना है वीकली है जी। टीपीएस बारबरा के साथ मुझे आज 2 फ्लावर मिले सीनियोरा के। भाई नसीब तो है बे। से समथिंग गुड अबाउट मी है जी। और भाई क्या हाल चाल आपके? एकदम बढ़िया, आप बताओ। दर्द भी मिल रहा है, मजे भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ सब कुछ चल रहा है। से आई एम हैंडसम। एजे सर यू आर हैंडसम। ए एजे सर आपके डीपी में वो है क्या? सोफोक्लिस का जो भाई रहता है वो है क्या डीपी में? लाइक मैं जान सकता हूँ उसके पीछे का कारण कि वो आपकी डीपी में क्या कर रहा है? नाइस जोक। डेंजी है क्या? ओ माय गॉड, दिखा ही नहीं मेरे को तो। मेरे को तो सोफोक्लिस का भाई लिखा दिख रहा है भाई। डेंजी है क्या? ओ माय गॉड, दिख ही नहीं रहा मेरे को तो। फिर ठीक है, फिर ठीक है, डेंजी तो चलेगा। तभी आप मेरे को सिंप सिंप करते हो। डेंजी को देखा है एक बार भाई, कितना सिंप है वो। हेल्यू मेरे को सिंप बोलते हो पागल। ये दोनों उड़ने वाले हैं? नहीं है, चलो आई। Busted. Odds revealed. Let the show begin. Share my knowledge. Game's up. Fun's over. Midnight Phantasmagoria. मिडनाइट फैंटास्मागोरिया। Quietly now. इचिगो सिंप इज ग्रेटर देन डेंजी टू बी ऑनेस्ट। भाई क्या भाई, कुछ भी भाई, मैंने कहीं कहाँ पे सिंप किया भाई? हेल्यू मैंने कभी सिंप किया? डेंजी डजंट सिंप, ही जस्ट वांट फन है जी। लाइक डेंजी का सिंप नहीं और मेरा सिंप सिंप। वाह भाई। ये सही है भाई। राइडन पे सिंप नहीं किया तो स्कैरा निकाल। लाइक राइडन कैरेक्टर वाइज मेरे को चाहिए, ये ऐसे हाइपर ब्लूम के लिए समझो। तो स्कैरा लेके क्या ही करेंगे? कुत्ता टॉनी मीम याद आ गया। हाँ ना भाई। Everyone hold hands. Busted. By royal Things are about to get dicey. I'll protect you. अरे ये किधर से टपक पड़ा भाई? ए तुम लोग क्या कर रहे बे?
हाइपर ब्रूम याद आया, राइडन नेशनल और हाइपर राइडन भूल गए। अरे वो भी मेरे को याद है, पर हल्का सा फिर मेरे को मेरी विशेष याद आ गई ना, तो फिर मेरे को पता चला कि C6 सारा NH के अदर काइंड ऑफ फन है जी, ऐसी बात है क्या? चुप रे, स्कैरा निकाल न। निंगवांग पे चला लूंगा, बस स्कैरा नहीं निकालूंगा अभी, तो देख लो तुम लोग। टट्टी कैरेक्टर है भाई, एक नंबर का, कुछ काम का नहीं है। 7 पे अच्छा पोस्टर मिलेगा, नाइस। चलो आ जाओ BTS भाई। कौन कौन चाहता है ये स्कैरा निकाले? वोट 1 यस 2 नो 1, ये देखो फुल है। टट्टी तो कोई और भी है। BTS भाई देखो आपको क्या बोल रहा है, ये आपको टट्टी बोल रहा है भाई। डोंट से एनीथिंग अबाउट स्कैरा। ठीक है भाई। वन 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 वन। भाई अभी मेरे को कंटेंट नहीं चाहिए भाई। माय चैट फोर्सफुली लाइक फोर्स मी टू पुल, वो नहीं चाहिए भाई मेरे को, तो आई एम नॉट गोना पुल। कल कल आना कल। Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. हाइपर ब्लूम करो, हाइपर ब्लूम करो। क्या नहीं डाल ले लेते हैं भाई। इलेक्ट्रो आप ले लो, मैं तो बोलता इलेक्ट्रो क्या नहीं है। अरे मत करो, बैन खाओगे। स्पैम मत करो भाई, बैन खाओगे, बैन तगड़ा वाला। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Worst content creator. Thank you very much. Thank you very much for the support. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? ये दूसरा सुभजीत घोष कहाँ से आ गया? Take it easy. Here comes the catch. क्या मारा है बे इसको? धो डाला बे। कोकोमी ओफी, ए BTS आपके पीछे है, आपके पीछे है। नाइस नाइस, ले लो ले लो। ओ एक यहाँ पे भी है। अरे अभी और एक चाहिए। व्हाट? पूल स्कैरा कंटेंट ही कंटेंट, राइडन बेकार। नहीं, Dance, my I see pretties. everything. Make yourselves at home. Things are about to get dicey. राइडन वू। राइडन इज स्कैरा's mother, Hold the line. the best character in the Embrace game. your searing reckoning. ये हील करो बे। ये हील तो है। हल्का सा रह गया, हल्का सा है। Here comes the catch. Embrace your searing reckoning. Oh, must burn. I never asked for redemption. बेटा ग्रेटर देन मॉम स्कैरा निकालो। व्हाट मदर यू सिंपर। एक मिला या भाई, चलो। ओ माय गॉड, ठीक गुड। ये मिला मिल मिल के।
मेरे को सॉल्वेंट नहीं मिलेगा क्या? मदर वो लेफ्ट हिम बट आई एम वांट फन, आई एम वांट फन। व्हाट इज दिस लैंग्वेज ब्रो? निकालो स्कैरा कैटलिस्ट बिलेट की तो मेरे को तो सॉल्वेंट भी नहीं मिलता, बिलेट भी नहीं मिलता। आपको कम से कम कुछ तो मिला भाई। मेरे को लास्ट टाइम बिलेट कब मिला था पता है? मेरी नहीडा पुल हुई थी तब। 7 हो गए मेरे पास। कितने हो गए पता है? 6 2 4 5 और स्वॉर्ड वाला एक भी नहीं है। कर सकते हैं भाई। हो गया। विडसीट को हटा दूं क्या? स्विच ये लगता है। चलो क्रिट डैमेज, लेट्स गो। अरे भाई ऐसे नहीं करना। एजदा को पेलते हैं। चलो ठीक ठीक ठीक, आता हूँ आता हूँ। ये अपग्रेड कर लूँ हल्का सा। नेवर माइंड। वेडनेसडे सैटरडे संडे नहीं हो पाएगा अपग्रेड। लॉल। सॉरी वो गलती से हुआ। क्या गलती से हुआ बे? इदा को अच्छा नहीं निकाल रहा तो मैं जा रहा। ऐसे बात क्या? ए टीम रखिए का? टीम से तो एनएच वाटर एंड वो वाला था ना। ये एम्बर निकालता हूँ। लेट्स गो। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर द एम्पर मेन गेम प्ले। चल बाय अगर नहीं निकाल रहा। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ऐसा एक बार गिरा ना, दोनों 1 हिट हो जाएंगे मेरे। ए इस बार मेरे को नहीं दिया, इस बार मेरे को नहीं दिया। पीक टीम गेम प्ले ब्रो। इस एक बार गिरा ना, मेरी नाहिदा 1 हिट हो जाएगी। Quietly now. मोटूलाल ये ले। Game's up. Fun's over. अबे साले I see everything. Hold the lamp. ये लो भाई, हाइड्रो कर दिया। अभी सिर्फ इलेक्ट्रो लगेगा इनका और मेरा डेंड्रो बस। जी जी अभी देख रहा है। यस भाई Everyone hold the अभी देखा गया। ए मेरी तरफ मत आ पागल। अबे कूद रहा है क्या? पागल है बे। Here comes the cash. I see everything. Yeah. ओह 6000। Take it easy. भाई आज तो मेरी डॉजिंग स्किल्स अच्छी चल रही है भाई, देख रहे हो? You stand upon your tomb, though you know it not. 12,000। लेट्स गो बे। नाहिदा ओपी और व्हाट? ओए यार ये नहीं मजा आता भाई। Gotcha. Things are about to get dicey. I'll clean this up. डॉजिंग स्किल्स Will not be destroyed.
डॉजिंग स्किल, अरे यार सॉल्वेंट, भाई सॉल्वेंट नहीं दे रहे मेरे को पिछले 3 वीक से यार। मेरा सॉल्वेंट किधर जा रहा है भाई, मेरा सॉल्वेंट किधर जा रहा है भाई। मेरे को मेरा सॉल्वेंट दे दो रे बाबा, सॉल्वेंट दे दो। मेरे को सॉल्वेंट दे दो रे बाबा, सॉल्वेंट दे दो रे। Rain again? This isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna चलो set us back. इनके way फेवरेट more. स्केरा को पेलते हैं बीटीएस, क्या बोलते हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्केरा को पेलते हैं भाई। बहुत स्केरा स्केरा कर रहे हैं, आ जाओ। मेरा रेजिन खत्म, आ रहा है भाई। और तो क्या भाई, यस भाई, ETS भाई। टुडे नो स्किल इश्यूज, हाँ ना भाई, नो स्किल इश्यूज टुडे, ओनली फ्रो गेम प्ले, फ्रो। अरे वो लो ना, पॉट से ले लो, पॉट से ले लो। सब डैमेज तो मैंने किया हाइपर ब्लूम से, क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो नहीं दिखा भाई। आप लोगों को दिखा क्या? मेरे को तो नहीं दिखा भाई। हाइपर ब्लूम के लिए मेन चीज जो नाहिडा थी वो किसने डाली, वो बताओ। मेरे नाहिडा में क्रिट रेट हल्का सा कम पड़ रहा है, हल्का सा नहीं, कुछ ज्यादा ही कम पड़ रहा है। I only wish life could be as leisurely as तो this a व्हाट little कैन आई more. चेंज? इसमें तो 12% क्रिट रेट है भाई। Silly of me. I can change this. I can change this also. I can change this also. Take. इनवाइट करो पॉट में। हैं जी, अपने पॉट से नहीं ले सकते क्या ये? अरे भाई Really? ये क्या बात होगी भाई? BTS भाई, कल आओगे क्या? थोड़ा सा यार 57 मोमेंट हो गया। Why is the sun such a pain? हो तो गया भाई, हो तो गया। No way I can get a nap in this weather. आ जाओ भाई। भाई ये ऑनलाइन आ गया। Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. स्लो लोड हो रहा है सब। We need Nilu build justice for Nilu. बेचारी 60 लेवल पे बैठी है भाई। 550 100 11% HP, नई स्वॉर्ड पकड़ाई है भाई बेचारी। इसके पास वो भी नहीं है, आर्टिफैक्ट्स भी नहीं है भाई। 111 पे झूल रही है बेचारी। SSD की हम किसी नीलू बिल्ड देख लो, देख लिया तभी तो Navigating the world is a Justice whole lot easier or with 2 different identities to choose नीलू from. बोला। Need me to come up with some for you? पादी सारा फार्म करवा लो, मिल नहीं रहा। कल
करवाता। It's raining again? आ जाओ वीडियो This पर। isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. इन लोगों के स्कैरा को पेलते आज। इक्वाइन कर दिया बे। Alright, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. आ जाओ भाई। कैसे मारना है स्कैरा को? बूम बाम। कोकोमी ले लेना। वरना जीजी हो जाएगा। A blade बूम बाम embraces तो its वो duty, करती थी। as a jeweler cherishes their gems. बोलते बूम बाम तो वो करती थी। बूम बाम तो वो करेगी 8 दिन बाद। इसमें है क्या राइडन का? नहीं है क्या? 8 दिन ही बचे ना? नहीं बचे 7 दिन या मतलब 8 दिन ही बचे। आजा बेटिया बाय। मैं तुमको जन्नत दिखाती। That divinity is mine. Perish! Game's up. Time's over. आह Insignificant past. Hold the line. The temple's wisdom. Busted. Here comes the cash. At my command, you shall fall. हाँ ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ऐसा भी होता है क्या? हिल करो बे। अरे यार हग दिया। बीटीएस भाई हल्का सा स्किल इश्यू हो गया। Take it easy. ये क्या है? मेरे को भी मारना नहीं आता, बीटीएस भाई को भी नहीं आता भाई। जीजी हो गया। Get dicey. A thousand eons, mine to dominate. रिवाइव करो। रिवाइव नहीं है रे, टाइम है। मैंने सोचा आपकी कोकोमी मेरे को हील करेगी पर एनएच के हो गया वो तो मेरे से। Fun's over. भाई बहुत मार रहा है भाई ये तो। Burn to oblivion. मैं साले बोर्न टू ऑब्लिवियन की ऐसी की तैसी। यार बीटीएस भाई हील कर दो यार। डर गया। मैं किधर हील कर रहे रे बाबा, मेरे को दे दो यार हील। हाँ ये Take it easy. Reality? अभी भी 23 सेकंड है। Stand with me.
अरे उड़ गया। ए हंस मत भाई। जीजू हो गया। तोड़ना पड़ेगा बीटीएस भाई, वरना जीजू हो जाएगा। नहीं टूटेगा क्या इससे? जीजी बीटीएस भाई, कल आता मैं। बे टूटता कैसे है ये यार? बेचारा फिर से मर गए रे बाबा। जीजी Your new god awakens. है? डैमेज ही नहीं पड़ा। ये तो टट्टी निकला बे। अच्छा एचपी फुल हो गई क्या इसकी? ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या यार? पिछली बार तो मैंने रैंडम्स के साथ मारा था, बहुत ही तक पील दिया था उसको। अच्छा मेरे के अरे यार मेरा डेंट्रो भाई फिर से मर गया, माय बैड। रुको भाई, वो लगाने दो। चोर बे। ये सॉल्वेंट मिला बे। क्या क्या मिला? स्वॉर्ड बिलेट। ओ माय गॉड, स्वॉर्ड बिलेट मिला बे। जी बे, स्वॉर्ड बिलेट मिल गया बे। ये वाली फाइट हल्की सी कट कर देना, कट कर देना गाइस, कुछ हुआ नहीं था। कौन सी? आपकी कोको मीने हील नहीं किया, मेरी गलती नहीं। I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. ना ना कुछ नहीं हुआ था, बस 10-15 क्रिस बन गई। अरे यार मेरी नाहिडा फेंट हो गई थी ना, तभी बीटी हो गई यार। मेरे पास ये वाला वो लगाया नहीं था भाई, तो हल्का सा लेफ्ट राइट हो गया था। हील कैसे करूं भाई नाहिडा को? मैंने मैं चांस ले रहा था, मैंने कहा गलती से अगर कोकोमी का एक स्प्लैश पड़ गया तो हील हो जाएगी वो हल्की सी, पर हर बार मर गई बेचारी। मेरा जेलीफिश ऑन ही था, तू छोटी बच्ची बन के पता नहीं किधर गोल गोल घूम रहा था। डॉज कर रहा भाई। ना ना मैं बस बोल रहा था। होता है गाइस, होता है कई बार प्रो प्लेयर्स भी मरते हैं गाइस। आज इवेंट भी आया क्या गाइस? आ गया है। डॉज, वो डॉज था, डॉज ही था भाई। कितने सारे अटैक्स डॉज किए मैंने उसके, पता है? इश्यूज भाई, अल्ट्रा इश्यूज। ठीक है भाई। चलो मैं चला इवेंट का फेस करने। डॉज सुन के मर रहा, वो डॉज था लॉल। मैं कब का चला गया।
ठीक ठीक। Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. स्टोरी खत्म करके आता हूँ। Can you check my desert pavilion artifact? Is it good or anything if you have time? कर तो सकता हूँ, आईडी हल्का सा दे देते तो। वैसे एजे सर है क्या तू? बेकार है, ये अच्छा है पर 4 स्टार है, ये भी अच्छा है। ये बेकार है, ये भी बेकार है। यार ये अच्छा है पर 4 स्टार है पर अच्छा है। 12 पे 3 के 3 क्रिट डैमेज पे हुए भाई, ये बेकार है। 30 निकाल लो। सब बेकार है हाँ ना। उसका पर अभी एआर कितना था, एआर लेवल देखा ही नहीं। फोर्टी 45 था तो अभी तो 5 स्टार मिलेगी भी नहीं उसको। अभी से क्या फार्म कर रहे भाई, पहले 50 पहुंचो आराम से, 5 स्टार कंफर्म हो जाएगा फिर, या 45 पे होता है कंफर्म। वो मीम लगा दे जल्दी से। या थैंक्स फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। लाइक जो आपने बोला मैं तो बोला भाई, बेकार तो बेकार भाई, कोई बात नहीं, अच्छे भी मिल जाएंगे। मेरे पास भी बेकार आर्टिफैक्ट पड़े बहुत सारे, क्या ही कर सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। उसमें ऑनेस्ट ऑनेस्ट क्या भाई, अच्छे है तो अच्छे। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको। आ गई मैं, कहाँ गई बे, ये रही। अभी इस आर्टिफैक्ट को आप किसी भी तरीके से अच्छा नहीं बोल सकते, बेकार आर्टिफैक्ट है ये तो, बेकार ही है तो बेकार ही है। ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये अच्छा है और ये भी बेकार है, पर क्या ही कर सकते, जो है वो है भाई। सर्कलेट दिखा दो तुम्हारे, दिखा दो क्या? सर्कलेट तो अच्छा भाई, इसका देखो ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। मैं तो सर्कलेट का छोड़ो, मैं आया का क्रिटरेट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लो, ये बेकार है भाई, क्या ही कर सकते हैं। A blade embraces its duty. Yep, that we as a remove it. jeweler cherishes their gems. I wasn't complaining. पता है सिर्फ बोल रहा था भाई। This world is full of unsolved mysteries. यार बारबरा को रखने की इच्छा सी हो रही है आज। बारबरा को रखते क्या? बारबरा को अपग्रेड करना मेरे को तो। नेवर माइंड, wonder when I'll be as tall as... नहीं कर सकते। मेरा 22% बे है जी, क्या 22% बे? ए 69 लेवल की हो गई है, ओ माय गॉड। आया का क्रिट रेट। और आपके पास तो रोजेरिया है भाई, रोजारिया आपके चलता है, मेरे पास रोजारिया भी नहीं है। चिंजू फॉरेस्ट में जाते भाई, चलो। कैसे नहीं है पर उसको बिल्ड नहीं किया है ना, है तो सही। ये रही 30, ये रही, ये देखो C0 पे क्या ही करूं बिल्ड करके इसको। और मेरे पास वेपन भी नहीं है, ये देखो ड्रैगन बिन लेके खड़ी है भाई टट्टी। नहीं चाहिए उसका कौन, फवोनियस लेंस चाहिए ना, फवोनियस लेंस तो चाहिए ना। नीलज पुल करना होता है सेम नहीं एक कैरेक्टर से। अरे ये मेरे को स्टैंडर्ड बैनर में से निकली पागल, मेरे पास इसके वेपन ही नहीं है, क्या ही करूं भाई बिल्ड करके, क्या गई। आप लोग बताओ, चलो बिल्ड कर देता मैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं। कौन सा वेपन लगाऊं इसके पर, ये दो
कौन सा लगाऊं? ये लगा दूं थोमा वाला? ये तो अभी अभी निकला था भाई, लाइक इवेंट पे, तो इसको छोड़ो। उसके अलावा कौन सा वेपन है जो मैं इसको दे सकता हूँ? मेरा R5 R4 है, ड्रैगन स्पेन। Traveler, Paimon, ए जो, please let me be your partner for the final round of the test of courage. अच्छा ये तो सीधा बन गया भाई। वेपन है ना, स्कारा निकाल ले। नहीं। I'd like your assistance with this investigation, since you two are the only ones who have seen the alleged ghost. भाई वो घोस्ट है क्या? आज पता चलेगा फाइनली। Traveler? फाइन बाय मी। डू यू हैव एनी आइडियाज सो फार? हे तू? I have a few theories, but we don't have enough leads yet. There are some places I'd like to investigate first, so you two can accompany me. Sure. Where would you like to start? तू स्कारा निकाल रहा नहीं और बोल रहा। भाई मैंने तो बोला मैं नहीं निकलूंगा। व्हाट? I want to go back to where we first met up. According to your accounts, you encountered the ghost there and passed out. और बोल रहा वेपन नहीं है। मेरे को चाहिए था वो वेपन है, मेरे को चाहिए था। तुमने बोला था भाई 10 पुल करने को, मैंने किया भाई, उसमें निकला तो मैं क्या करूं भाई? I believe there may still be some clues there. Do we really have to go there? What if we're walking into a trap? Are you worried that she'll be waiting for us? If anything, that would make things easier. हाँ ये एज़ो को तो डर ही नहीं We लगता won't be भाई। able to find her. Honestly, it'd save me a lot of trouble if she were to show up on her own. Wow, Hazel. You're fearless. भाई मैं आराम से C2 राइडन विथ उसका वेपन लेके बैठा होता अगर मैंने नहीं डाला और ये वेपन बैनर पे पुल नहीं किया होता। क्या ही कर सकते पर। The more cases you see, the less afraid you become. Let's go. The Currents of Life Part 3। This should be approximately where you first encountered the ghost. Of course, we cannot conclude whether the woman is actually a ghost or not at this point. Yeah. I'd like to go over everything that happened again. Do you recall anything she said at the time? Let Paimon think. थिंक करो बे पाइमोन, सोच। She warned us not to go near her, and she said if we didn't leave, our souls would become trapped here. Paimon doesn't want to remember. फट रही है पाइमोन की भाई टेक्निकली। Just thinking about it. And then what happened? Then everything seemed to get darker, and Paimon started to feel dizzy. There were ghostly flames flickering all around, and Paimon saw some sort of black mist surrounding the ghost, and then Paimon passed out. Based on your account, it does really seem like you've seen a ghost. Exactly! So are you convinced it was a ghost now? It's possible, but I'm more interested in what she's actually trying to achieve than what she is, even if she is a ghost. As long as she possesses some sense of reason, then there must be some purpose behind her actions. टेक Isn't she after our souls? She said that herself. I think she was just trying to scare you. Oh, you think so? Think about it. If I had the ability to take your souls, then why go to the trouble of warning you over and over again? Besides, a ghost wouldn't have allowed you to walk away knowing about the secret of its powers. That does make sense. Huh. Why didn't Paimon think of that? because you were always too scared to think straight, lol. I believe there are only two possibilities. The first is that she wanted to reap your souls, but there was some condition that had to be met. You know, like what we usually call a curse. But if you had really been cursed, then you would probably have noticed it by now. बात तो सही है। So, this is the less likely scenario. I believe she was just trying to scare you away. But why would she want to scare us away? Oh, Paimon knows! Maybe she was trying to get us to quit so she could claim the Test of Courage prizes! Was she registered as a contestant? Oh! Probably not. So why does she want to scare us? Do you have any ideas, Hazel? Based solely on your account,
I don't believe she actually meant any harm. She just didn't want you to stay here. But this evidence alone is insufficient to make any valid assumptions. She could very well be guarding some treasure or covering up a crime. Though, my intuition is telling me that neither of these hypotheses are correct. Let's continue investigating the surrounding area. Look for the clues. There are some footprints visible on the ground. However, upon closer inspection, they seems to belong to Heizo and myself. Huh? पढ़ने नहीं दिया बे. I have looked all around, but I haven't found any clues. Looking up, there are a few branches that have been bent slightly downward, as if something heavy had been hanging from them. उड़ गई थी क्या भाई? तारक मेहता वाला केस लग रहा है मेरे को तो. बता रहा हूँ. Have you found any leads yet? I noticed some branches that seemed a little unusual. Yeah, some tree branches seem like they were bent by something, but that's about it. I see. After you left, I took a good look around the area. Aside from the bent branches, there are burn marks in some places, but that doesn't really tell us much. If only there was some more conclusive evidence. Excuse me. Sorry to interrupt. Hey, वो आ गए yokais. Oh, it's you guys! What are you all doing here? We heard you were out searching for clues, and we wanted to help. Oh, that's really brave of you. Actually, we're also really unsure about what's happening here. We just asked the members of Mr. Ito's gang about what happened to them. And it sounded really scary. That lady is either a nasty evil spirit or a formidable yokai. Either way, it's not good. But we still want to hold the Mikawa Flower Festival. Uh-huh. We long admired the friendship between Lord Kamai and the samurai, which is why we want to hold the Mikawa Flower Festival, to return the favor we once received from the humans. Even though our powers are limited, we don't want this bond of friendship to vanish. The Mikawa Flower Festival is meant to be enjoyable for everyone. The Chinju Forest covers a large area, so it'd be great to have more help in the investigation. Welcome to the team. Let's all do our best to figure out what's going on. Don't worry, we're very familiar with the area. We won't miss any clues. Investigate a little yokai's findings. Okay. क्या मिला बे? कापा भाई क्या हो गया? What I found down by the river. क्या 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 क्या? Huh? What is it? Is it a scrap of black cloth? I've never seen fabric like this before. This is a piece of shade cloth. Shade cloth? Shade cloth. Yeah. It can effectively block out light and is used in a variety of settings, including stage performances. There's a rough tear in the cloth, probably caused by a sharp stone, or maybe some branches. Branches? Suppose that a large shade cloth was originally hung from a tree, bending the branches. When the shade cloth was removed from the tree, perhaps one of the corners caught and the branches ripped it, causing a small piece of black cloth to fall into the river. Either she didn't care, or she was in too great a hurry. Perhaps she had other things to handle at the time. But why would she hang shade cloth in the trees? I'm only speculating, but maybe she used it to create the atmosphere you experienced. What do you mean? Let's not worry about that for now. There's still many variables I haven't deduced yet. Next, I'd like to investigate the place where the Arataki gang encountered her. Do you know how to get there? Oh, I know the way. I asked the gang members where their encounter with the ghost happened when we were chatting earlier. I'll take you there. Good. Please lead the way. Let's go Let's बे. go find out what's going on. बोल रहा था ना तारक मेहता वाला केस है भाई ये. डरा रही है सिर्फ ये. है नहीं भाई घोस्ट घोस्ट. This is the place. They claimed that as they passed through here, the area suddenly grew dark, and some ghostly flames appeared out of nowhere. What a coincidence. We saw the very same thing. Let's start by taking a look around the area, just as we did before. इन तीनों को मिला कुछ ना कुछ. क्या मिला बे तेरे को? I found some sort of smashed ball under the tree.
The inside of it looks like it was blackened by smoke, and it smells like fireworks. Okay. याऊ को तेरे को क्या मिला? Judging from the burn marks left on the scene, the ghostly flames you saw were not created by yokai power. Rather, they appear to have been caused by something flammable. I'm not sure what though. एटमॉस्फेयर क्रिएट करा गया है भाई. There's some strange powder in the cracks of these stones. I picked some up and sniffed it to see what it is, and it made me really dizzy. Ugh. I'm so tired now. Listen to Jesus analysis. Hey Jesus, बता भाई क्या चल रहा है? Similar scare tactics. And she didn't have the time to completely hide the traces. I believe we're closing in on the truth now. I'm almost certain that the woman you encountered was not a ghost. She possesses no extraordinary powers. She was merely scaring people with some small props she had set up ahead of time. Some small props? But can you really do all that with just some props? What we saw was absolutely terrifying. First and foremost, the test of courage. You were initially frightened by your first encounter with these 3 yokai, and then shortly after, you ran into the mysterious woman. It was natural for you to be on edge. Because you were already tensed up, you were breathing more rapidly and inhaled a lot of sleeping powder that she had sprinkled around the area. That is what caused you to feel dizzy. Oh bye. That's when she pulled down the shade cloth and lit those so-called ghostly flames, creating a terrifying scene. That's the most likely explanation anyway. So, it was all just a show? She tricked us! There is, however, still one loose end. The person who commissioned my investigation did become stranded on the beach as a result of some unusual power. That couldn't have been accomplished by just a few small props. But if she possesses such powers, why bother with the theatrics? Oh, Paimon can't wrap her head around all this. She can only use props to scare people in the forest, but she can use strange powers on the beach. Huh, I see. I think I've figured it out. Whoa, that was fast. If we rule out the potential of organized crime, then only one possibility remains. I know who the woman is. Let's go to the beach. पता चल गया भाई इसको तो. We'll come along too. No. You should go back and tell the others not to be afraid and not waste their time searching the forest. The truth has surfaced. It's time to put an end to all the unnecessary panic and await the outcome of the test of courage. Okay. साइन मैडम ही तो नहीं है ना Please be भाई. careful. If you run into any danger, simply call out our names. We'll be able to hear you. There shouldn't be any danger now, but thank you anyway. Let's go. Let's search along the cliffside. If I'm not mistaken, there should be a chunk of earth that's unlike the others. Look for anything unusual on the beach. I knew it. I knew that you would come find me here. There she is. Paimon thought you were a yokai like the others, but they said they never seen you before. So, who are you? And why did you try to scare us? I have already warned you never to speak to me. If you don't leave now, then... She's terrifying! Hazel, it sure doesn't seem like she's using any props this time! Don't move. Just trust me. Your yokai power won't scare us. It will only hasten your demise. Yokai power? Huh? How did you know? You're a yokai that emerged from an object and assumed a human form outside of your own body.
When this type of yokai is close to its own body, it can use some yokai power, but that ability weakens as it moves further away. And if the original body is destroyed, then the yokai that originated from it will likewise perish. Should I refer to you as a Hagoita spirit or Tsukumo Gami? Don't bother. You may call me Hanyuda Chizuru. That is the name I go by now. Chizuru, why do you want us to leave? If you're a yokai, you should understand why the other yokai want to interact with humans. Besides, we had a great time playing Akitsu Yugen together, didn't we? Just like the story of Kamai and the samurai. Yes. That's why. That's why I don't want you to be sad too. Sad? Auntie. What do you mean? I'm sure the yokai have already told you of the story about Kamai befriending the samurai. But they don't actually know the entire story. अच्छा जी बताइए जरा. The samurai was about 25 years old when they met at the festival. They met again 10 years later and remained friends. They spent time together drinking, traveling, and sparring. When they had first met, they merely respected each other, but 10 years later, they became best friends. After another decade, the samurai had reached the pinnacle of his swordsmanship and won their duel by a narrow margin. Kamai was so astonished by his defeat, he gave up drinking and began training to become stronger for their next duel. However, Or another 10 years later, Kamai did not meet the samurai. Yeah, man. As it turned out, war had broken out in the south, and the samurai had gone to defend the border. Kamai was unconcerned, because 10 years was nothing in a yokai's lifetime. But when they met once again, Kamai discovered that the samurai was already 65 years old. बूढ़ा हो गया He बे believed बेचारा. his eyes when he saw the samurai's gray hair and scars covering his body. Hey, old friend. Can you still wield the sword? I'm getting too old to fight. This time, I've come to say goodbye. I see. Then, how about one last game of Akitsu Hazara? All right. The samurai gave his best effort during the Where are those who shares the memory हो गया हाँ ना भाई. through because he was Perfect dialogue. After putting down his agoita, Kamai remained silent for a long time before letting out a long sigh. What a shame. Their friendship started as something they looked forward to, and in just a few decades it turned into regret. Lord Kamai's appearance hadn't changed, but his dear friend in front of him had grown old. The joys of friendship gradually gave way to the pain of regret. People often say that those outside the situation can see things more clearly. And I learned a harsh truth after witnessing all of it. Everything that people come to regret is inevitably set in motion from the beginning. We yokai are different from humans. We have longer lifespans and different natures, but we share the same world. We interact with one another. We are drawn to one another, and will eventually part ways. When the dream ends, all that is left are sorrowful memories and lingering pain. Even a wise and seasoned yokai like Kamai felt sadness when it was time to say goodbye. Imagine what a pure and kind little yokai would feel. Oh. So, you mean... I was hiding on this beach, waiting for the last of my days. But those 3 yokai came and set up the Akitsu Yugen here, which woke me from my slumber.
I didn't want them to approach humans with unbridled optimism and enthusiasm just because they'd heard the legend of Kamai and the samurai. That would simply be repeating the same mistake. Is that why you pretended to be a ghost? To scare all the people away from here? Oh, so you must be the one who trapped that guy on the beach. That was a little bit harsh, don't you think? My power has become pretty weak now, and most of the time I just use some props I've collected to scare people. I can't show myself when there are a lot of people around. But that jerk was greedy. He wanted to steal the decorations from Akitsu Yugen and sell them for a profit. That's भाई why I used my yokai power. इंसानों का to तो teach भाई him a कोई कुछ lesson. नहीं कर सकता. Ah, so that's what happened. You have a strong sense of justice. ब्रो कल मैं रात को वो देख रहा था एवेटार 1, तभी मैं सेम चीज बोला था कि इंसानों का कोई कुछ नहीं कर सकता भाई. मोस्ट ग्रीडी पीपल्स और व्हाट, लाइक मोस्ट ग्रीडी I creatures. know the rest of the story about Kamai and the samurai. It's okay if you don't want to tell us. I've already figured it out. Your true form is this pair of Hagoita, isn't it? हाँ मतलब वो जो लास्ट में वो जो खेले थे उसका, लाइक तभी उसको पता है. That means she's... The pair of Hagoita used by Kamai and the human samurai to play Akitsu Hazura hundreds of years ago. You gradually developed sentience after being influenced by great yokai power. You were the closest to witness their story. Even with the yokai power's blessing, the Hagoita have started to rot away after hundreds of years. You can't sustain yourself, so you were forced to rely on props to scare people. And if my theory is correct, this pair of Hagoita is also the item we need to find for the third round of the test of courage. Excellent work. अरे Figured it all out. यार मिको, oh my god, Congratulations, little ones. what a You passed the surprise. third round of the test of courage. Miko? And the Shrine Maiden? Paimon thought you went missing. I apologize for causing you concern. It was actually Lady Yai's idea. Well, what did you think? Were you scared? नहीं. Because fear is induced by uncertainty, the more chaotic the situation, the better. Having the event staff also mysteriously vanish only added to the uncertainty. I must say, I think this test of courage truly lived up to its name. So you're the one responsible for all the scary stuff. Hitomi, go tell the others that the test of courage has ended and that we have a winner. जा भाई जा. Now that I've solved the mystery, I'm going back to meet with my client. The intent to steal is not exactly a serious crime, but it can't go unpunished. I'll see you two later. छोड़ेगा नहीं इसको तो. Did you choose the Hagoita for the third round of the test of courage because you already knew about Chizuru? Miko, Lady Yai, you're... I followed Kitsune Saigu around the Mikawa Flower Festival one year and saw her play Akitsu Hazura. That was when I saw you. You didn't have a human form at the time and possessed only the earliest traces of sentience. I remember now. You were on Kitsune Saigu's shoulder. I went for a stroll on the beach some time ago and sensed a familiar yokai power. Though your power was weak, I was still able to find you. You were sitting in a tree, gazing at the tourists below. I overheard you telling yourself that you must be patient and avoid contact with humans. Huh? When was that? I didn't notice you at all. With your powers being so diminished, it was only natural that you didn't notice me. You must have been blaming yourself all this time. You knew Kamai and the samurai became friends as a result of Akitsu Hazura, a game connected to your existence. At the time, I couldn't take on a human form like this. I had only a hazy sense of the outer world. After they first met at the Mikawa Flower Festival,
I felt proud to know that I had left a mark on their story. But after they said their final goodbyes, I could often hear Kamai sighing to himself. I couldn't help but hide, because I blamed myself. When I woke up again, the world had changed. Lady Yae, you are a well-known yokai. You must know many more things than I do. So I have a question for you. People meet, become friends, and then go their separate ways. After such a short time, they leave only regret and sadness in their wake. Is it really worthwhile for us yokai to interact with humans? Why not? Tell me, how did you feel when you played Akitsu Yugen with the Traveler? I felt happy, but... But your rationality told you that it was wrong, didn't it? It turns out that there is still another piece to the story of Kamai and the samurai that you are missing. अच्छा जी. What do you mean? The samurai and Kamai never met again. True, but the story doesn't end there. That samurai's name was Yanagibashi Takuto, who also happens to be the founder of the Soran Ishin art. It is believed that Takuto developed this style of swordsmanship while dueling with Kamai, who had also befriended the third-generation heir of the Soran Ishin art, Tominaga Masanari. 500 years ago, Kamai and Tominaga fought side by side until their final moments, and the sword Tominaga wielded was passed down from Yanagibashi. The regret Kamai once felt had finally been resolved. Oh. I never knew. स्टोरी के ऊपर की स्टोरी बताई भाई Yokai इसमें are तो. not like humans. Humans have too short a lifespan, and the day will inevitably come when we must say goodbye. However, the bond formed by friendship will not be broken, but rather carried on in a new form. There's no reason to be upset by this. Time flies by in an instant, and life passes by like a dream. So, you must be happy in the present. You should understand what I mean now. Hey, compadres! अरे अरे ताकि तो इधर. Oh, what are you doing here? You told me everything. And I also heard that you won the last round. पार्टी लेने आया भाई ये. Ghost lady is now. Anyway, I had a little discussion with the others, and hey, you're that fox lady. Why are you here? Fox lady. Please just disregard my presence. Now, tell us what you discussed. Ah, right. Arre. listen up. To celebrate the end of the Test of Courage event, we will be holding the Mikawa Flower Festival. I gave it some real thought and realized that it might be kind of difficult for those little yokai to hold the festival on their own. But with my help, it won't be a problem. That's right. पार्टी ये दे रहा है बे. Noni Ito will be in charge of organizing the best Mikawa Flower Festival anyone's ever seen. क्या बनता है बे. Hooray for Ito! Oh, सही है. Can we really trust this guy with a festival? Why not? Hey, what you trying to say? Besides, it won't just be me. Other people will help too. Even my bro Ayato is gonna be there. My bro. Everyone's busy getting ready, and the festival will be up and running in no time. It won't be long until you can all join the fun. You're the best, Ito! अरे अरे हवा में उड़ा दिया भाई इसको तो. इतनी टाइम में सेटअप भी कर दिया. and what would a festival be without me? I'll be sure to go have a look too. It has been some time since I've attended a festival. Fortunately, I brought sake with me. Paimon's gotta admit, Ito does have his moments. A festival, delicious food, count Paimon in! इसको तो फूड मिल गया, खत्म हो गया इसका. You want to join us, Chizuru? All right, I'll join. If you don't mind, that is. अम्मी को ये दारू दिया निकली. Looks like the festival has started! Let's go check it
वेंटी का नाम सुना है? अरे गोरू से बात नहीं करनी थी भाई। Ito and Goro! What are you two talking about? Oh, I was just saying that if I had more time, I'd have built a massive fishing pond here. अच्छा जी। Fishing. You know, when I lived on Watatsumi Island, I used to just dive into the sea and catch fish with my bare hands. अरे भाई भाई। Take it from an expert, using your hands to catch fish is nowhere near as fun as using a fishing rod. अच्छा। Just the other day, I caught a fish so big that I didn't even know how to handle it. I even wrote a letter to Yai Publishing House about it. लाइक मैंने भी भाई बहुत That's an unusual problem to have. फिशेस पकड़ी थी फॉर द कैच, और मेरे को तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया था भाई। Huh? You wrote a letter to Yai Publishing House? पैकेट में 5 मोरा हसे ना फिशिंग पॉन्ड बनावन्नो। हाँ ना भाई। Asked Miss Hina for advice. She's so बंदा सपने तो बड़े ही देखता है She got भाई। back to me really quickly too. Huh. What a coincidence. I do some part-time work there, and I recently received a similar letter. You mean the letter was about dealing with a giant fish they caught? No. Could it be? Could it be that there's someone as good at fishing as I am? Oh, not on my watch. Hey, you all go enjoy the festival. I'm gonna get out there and catch an even bigger fish. Just you wait. I'll be inviting you all to my fish feast. हाँ ये और एक पार्टी में बुला रहा था ये मिया। Aw, the string snapped. I was so close. Yoimiya, this is more difficult than it looks. Can you really fish out these water balloons with a string? Don't worry. Let me show you a little trick. Just remember that your hand has... ये मिया दिखी नहीं, सुवोजित दिखा भाई। Yo, Tsuri! Paimon's seen this game in some light novels before. Do you want to give it a shot? Close one eye, aim carefully, and fish it out quickly. Oh, it looks kind of tricky. Paimon will let the traveler try. You have to catch at least 3 water balloons since there's 3 of us. But Yoimiya, if I close one eye, I won't be able to see anything. एक ही तो आंख है इसकी, लॉल। योइमिया इज माइन, ये देखो। और मेरे को सिंप बोलते हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, तुम लोग बोलते हो योइमिया माइन, तो भाई सिंप कौन हुआ, मैं हुआ या आप लोग हुए? ये आया का, This ramen is so good. ये आया का बैठी बे। Yes, it feels like it's been ages since the last time I had some. You mean you don't get to eat ramen very often, Ayaka? But it's आया का सिंप। अरे यार गलत टाइमिंग हो गई भाई। It's you. We'll need 2 more bowls of ramen, please. Food like ramen and hot pot tend to have a lot of oil and salt, so I don't हमें get to काम eat पे them लगा के ये often. पोइमन यहाँ पे ठूसने आ गई भाई। Oh, that's unfortunate. Yeah, now Paimon totally gets why Ayaka would put cake into hot pot. Huh? Oh, please, no need to bring that up again. Phew, I'm stuffed and feeling a little... ये तो सो जाएगी भाई यहीं पे। I'm just gonna take a nap. By the way, were there any special stalls at yokai festivals in the past? Yes, but... well, it's a long story. हाँ ये सब लोग एंजॉय कर रहे भाई, एकदम मस्त फेस्टिवल। तू आया का राइडन मोना कुसनाली सिंपे और मैं सिर्फ योइमिया, ये डिफरेंस मेरे में और तेरे भाई। मोना और कुसनाली कहाँ से आ गई? व्हाट द हेक। मोना तो मेरे को पसंद नहीं है भाई, एंड कुसनाली तो छोटी बच्ची है भाई, उस पे कौन सिंप करेगा? आयाका को इसलिए क्योंकि आयाका वाज माय फर्स्ट एवर 5-स्टार कैरेक्टर, एंड राइडन इसीलिए कि राइडन राइडन है, समझ रहे हो? Paimon can't believe you couldn't get a... पर ये मोना और कुसनाली कहाँ से उठा के ले आए ना, वो मेरे को नहीं पता भाई। Chizuru managed to finally get one and gave it to Hitotsume Kozo. He looked like he really wanted it. हाय हे जे सर, वेलकम बैक टू स्ट्रीम। व्हाट्सअप? तू करता है कुसनाली पे स्ट्रीम, यू फकिंग मॉन्स्टर। ब्रो मैंने कभी सिंप किया भाई? क्यूट बोलना सिंप नहीं होता। हेलो, व्हाट द हेक। All right, then I'll catch one for you next time. Yay!
यार Come on now. This तुम is लोगों way का more सिंप expensive का than usual. मतलब ही नहीं पता People are भाई, busy, क्या so करूं you मैं। shouldn't hike छी up the छी prices छी this भाई। much. कांट यू सी माई चैट फ्रॉम अनदर अकाउंट? नहीं, बैन खाया क्या तुम? बच्ची भी सेफ नहीं है। आई वॉज टॉकिंग देयर। नहीं यार, एक चैट नहीं देखी मेरे को। Hey now, it costs money to run a stall. व्हाट I need to व्हाट raise डू यू my मीन बाय prices to बच्ची help भी cover सेफ the नहीं है भाई? expenses, you know? मेरा भी नहीं देख रहा, क्या बात कर रहे हो? देख तो रहा हूँ। Fair enough. How about 5 masks for 30% off? Final offer. ये ब्रो, थोमा तो फुल लड़की है भाई, उसको सब आता है, घर के काम, बार्गेनिंग, ऑल दैट स्टफ। मेन आईडी से चैट नहीं दिख रहा, बहुत स्पैम किया ना तभी पड़ा होगा कुछ तो लगता है। सेव मी, वाईटी का ग्लिच है ये। अच्छा जी, थोमा से भाई, भाई इसको सिंप नहीं बोलते यार। All right, all right. ए काजुआ, व्हाट्सअप? So hot. Feels like I'm being roasted. अभी इसको भी क्यों बाकी रखा है? इसको भी बोल दो काजुआ सिंप भाई। छी छी थोमा भी, ये देख लो भाई। नहीं नहीं, बैन नहीं, मेरा भी नहीं दिख रहा। ठीक ठीक, काजुआ सिंप। हाँ मैंने बोला था, ये क्यों बायक ही रह गया? इसको भी डाल दो भाई। Keep a few steps back. I know. It's just so rare to see such a nice bonfire. I want to get as close as I can to enjoy it. There are many beautiful things in the world. There's no need to be. यो anxious. काय सिंप, फ्लोरा सिंप। फ्लोरा कौन है बे? Only just begun. I was surprised that you didn't even tell your sister. It अभी seems आई मी को आई, quite इसको भी right बोल दो too. सिंप। It would have been आया तो भी है, uninteresting उसको भी if I बोल told दो। what was going to happen ahead of time. Besides, आया तो her सिंप। friends on हाँ her side, she सब wouldn't सिंप, ever सब be सिंप, too scared. सबका सिंप Having मतलब। a little fright is good to release any tension she might have accumulated lately. Everything went according to plan. People started to panic as soon as they sensed that they had no idea what was happening. क्ली How सिंप, amusing. क्ली तो आई है भी नहीं है भाई, मेरे पास है भी नहीं वो कैरेक्टर, क्या ही सिंप करूं भाई। Yes, well done. Hey, you two, stop laughing. It was scary. डॉगियन मॉन्स्टर सिंप, गुरु सिंप, पॉइमन सिंप भी लिख दो, मैं तो बोलता हूँ, वो रह गई, Finished exploring बुरा the मान world. जाएगी बेचारी। जस्ट अबाउट। Well then, are you having a good time? Yeah, it's great. The original Mikawa Flower Festival was much more lively, but even if you Paimon could Sip, attend yeah, the man. original, you probably wouldn't be as happy as you are now, because it's always more fun to enjoy a festival with friends, isn't it? Yes. Thank you. Well then, I'm guessing you have something you want to say to her alone. We'll leave you in peace. What did you want to say to us? Ah, you saw through me again. I can't help but feel you somehow know everything. It's not that I know everything. Bro. It's just that I've been in your position before. ओह, Traveler, do you have a moment? वो जित सिंप बोलता है, ये सिंप, वाह भाई। Alone. तुम दोनों तो हो ही भाई सिंप, यही करूं मैं। एक योइमिया का सिंप है और दूसरा होगा यार किसी का तो सिंप। चीजरू को मिलने जाना है बहुत दूर भाई। यू सिंप एट एज वी नो है जी। कुछ ढंग का इंग्लिश लिख दो यार, मेरे को भी समझ में आ जाए। एक भी छोड़ूंगा नहीं, सब ले लूंगा भाई। गंदे लड़के, अरे बाप रे, मैंने क्या किया भाई? आप लोग बना रहे हो मेरे को तो सिंप। मैं तो एकदम सख्त लौंडा हूँ भाई, किसी पे सिंप नहीं करता। All right, here will do. Thank you for agreeing to come with me. डोंट मेंशन इट। Actually, I was delighted when I first discovered that I could take on a human form. I was a yokai derived from a pair of Hagoita who came into being in the middle of a festival. So naturally, I enjoyed the lively festival atmosphere. इफ यू आर नॉट अ सिंप देन पुल। जी ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, मैंने काजुआ के लिए भी इतनी ही शिद्दत से सेव किया था भाई, तभी तो आप लोगों ने नहीं बोला था काजुआ सिंप। I wanted to go to more festivals,
become friends with humans and play Akitsu Yugen with them. But every evening, as night began to set in, I recalled Proof. the bitter smile of स्ट्रीम पे Lord पुल किया था, जाके Sunrise देख लो भाई पुरानी around the पुरानी Hotta, स्ट्रीम. and the lonely Kamai sighing as he drank his sake. Then I would wonder, प्रूफ है बे. if I became friends with a human, would that person experience the same melancholy in the future? As a result, I was convinced that I couldn't do it. I told myself I would not repeat that same mistake. मैंने जेनित्सु भाई ने और बीटीएस ने तीनों ने साथ में पुल किया था काजुआ तभी. I understand what you mean. I'm sorry that I spoke so strangely when we first met. I'm Sheesh. sure it must have scared you. I expected you to flee in terror. But when we met again, you acted like you had no trouble being around me. I knew you mistook me as one of the yokai. But instead of telling you the truth, I went and played Akitsu Yugen with you. Why? I'm not completely sure myself. Perhaps it's because I've always wanted to be like Kamai and play Akitsu Yugen with humans. Or चलो एक और बार खेल लेते फिर. because I knew I didn't have much time left. पॉइमन यहाँ पे हम and अकेले I गए भाई. didn't want to be alone. पॉइमन तो आई थी भाई हमारे साथ. Anyway, thank you for taking the time to play with me. Is she yokai simping on us now? Please no. हैं? क्या लिख रहे भाई? हिंदी में लिख दे भाई. इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं तेरे को. हिंदी आती है मेरे को. When we played Akitsu Yugen, Paimon said the loser would have to grant the winner a wish. At the time, I wished for us to never cross paths again. However, you still came and found me. Meaning, you never granted my wish. So, can I make another wish? Of Let course. me think. I wish for you to remember me. No. I only have one wish, so I better make it count. Okay. Listen carefully. You don't know to read. Also, I don't know My wish Hindi. is- अच्छा. I ये. that every day Fireworks. of your journey ahead will be filled with joy, like a festival. ये गायब हो गई. ये क्या थंबनेल वाला सीन है बे. ओ माय गॉड. क्या सीन है बे. मजा आ गया देख के. फाइनली क्वेस्ट कंप्लीटेड. कैमरा एंगल होपी. हाँ ना भाई. मेरी डीपीआई बदल गई ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को. अभी होगी. बदल ही गई थी भाई. 30 प्रीमोस फॉर मी. थैंक यू वेरी मच. बीटीएस भाई किधर बे. वो बोल रहे थे कुछ वोप में खेलने का. है क्या है भाई. चलो एक बार बात कर लेते हैं इन सभी लोगों से. कुछ ना कुछ पता है कि पता नहीं भाई. हे साई व्हाट्सएप. सॉरी भाई ये तो So tall. जो मिया. Every year when the fireworks go off, I say to myself, another year has already passed. As each year passes by, your life gradually approaches its end. But I don't think that's a bad thing. Like I always say, fireworks are for now, but friends are forever. ये Yuko, will you be here for the next Mika Flower Festival? Yeah. तुम लोग प्रीमोस दोगे तो मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा. Always. Ayaka. What's up? After hearing Chizuru describe the original Mikawa Flower Festival, I wanted to arrange another chance to talk with her about it. I didn't वो तो expect गायब that हो would गई be our बे. last conversation. वही तो यार गायब होगी भाई वो तो. ये कौन है. योशीहारू. भाई तू तो मत ही बात करियो मेरे से भाई. यार मिको. When Ayato approached me about holding the Test of Courage event, it dawned on me that this would be the perfect opportunity to help Chizuru face her problem. Kamai and the samurai's parting was one of the first things she experienced when she was partially sentient and didn't have her human form yet.
This was a very traumatic experience for her, and she could never come to grips with it by reasoning alone. The best option for her was to directly interact with humans. There's आया तो So, आपको कुछ बोलना है? did you enjoy the test of courage? अरे Once I एकदम learned of the yokai's intentions to hold a festival, I wanted to spread the word and attract people to their event. However, it occurred to me that doing so might be overly ambitious. If we marketed the Mikawa Flower Festival from the get-go, people would ए have सुबह हो arrived गई with बे insatiably high expectations. So I decided on using the test of courage's notoriety to attract visitors, and left the rest to the yokai. I had an inkling that their presence would spice up the event. Hitomi Eizo Kazuha. Will you have some time in the next few days, Kazuha? I'd like you to work on a case with me. Oh, Oh, did you run into some trouble? Not exactly. It's just an old case with almost no tangible leads. But I believe your attuned sense of nature might allow us to discover some new clues. Sure. I can stay after the festival and we can go investigate together. Great! Thank you. My pleasure. It's no trouble at all. nice one. You simper simp. अरे भाई इसमें क्या simp? थोमा जी आपका कुछ बोलना है रे बाप. Even though I knew my lord had most likely planned everything before the test of courage even began, I was still caught off guard. But in retrospect, it was a lot of fun. अच्छा जी तेरे को तो मैंने टीम में भी नहीं लिया था भाई. तो भी तेरे को मजा आया. यहाँ पे कोई नहीं है ना? Cool. It was heartbreaking to learn of Chizuru's story. To be honest, I experienced that same kind of sorrow when I'm on the battlefield. I don't know when I'll lose my comrades, so I try to appreciate every moment. ठीक ठीक. ये तो भाई आपका कुछ बोलना है? Lifespans, partings, it really gets you thinking, doesn't it? But, I got nothing. All I know is I'll never regret meeting you. अच्छा जी ये देखो इसको बोलते सिंपर. कैसा सिंप किया देखा ट्रैवलर पे. काप्पा. I love playing with human. Nice. इवेंट आ गया पूरा या मैन आ गया. आ जाओ इवेंट करते. बच्चा सिम. अच्छा अभी कुछ रह गया वो तो बता दो यार. ये मछलियां को भी सिंप करता हूँ बता दो. और कुछ रह गया बता दो भाई. ऐसे कर सकते तो है ना भाई इवेंट कोऑप में. अच्छा जी कर सकते बे. ट्रैवलर सिम. हाँ जी ईथर रह गया गाइस. ईथर रह गया. डबल चैलेंजेस इसमें क्या होगा बे? डबल हो जाएगा क्या? डबल ट्रबल. सो ही डज सिम. हैं जी. नाउ लोडिंग अकित्सुयुगिन. दो कैरेक्टर ले सकते हैं हम. ओके सिलेक्ट द मॉडिफायर्स. मेरे को तो शील्ड चाहिए ये वाली. दूसरा तो भी कुछ भी चलेगा. और तो ये क्या है? मूवमेंट स्पीड इंक्रीज. आयक और नीलू लिया उन्होंने भाई. ये देख लो भाई हालात देख रहे हो बीटीएस भाई के.
चिपक जाएंगे वो तो। बीटीएस भाई गलत जगह पे आ गए आप। प्रो प्लेयर इज हियर बीटीएस भाई। बीटीएस भाई नहीं बनाएंगे यार। बीटीएस भाई हेलो हालात। आ गोली आई। लैग अच्छा जी लैग हो गया भाई। बीटीएस भाई लैग मत। अरे 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 अटक गया। बीटीएस भाई अटकाओ मत यार। इजी यो इचिगो 015 सिंपर वाह भाई। इजी ये कैसे नाच रही बे। यार हाई स्कोर हल्का सा कम हो बीटीएस भाई आपके उसमें गड़बड़ लग रही मेरे को। पहले ये करते हैं। कंफ्यूजिंग एएफ मेरा कौन सा है पता नहीं चल रहा। अरे कोई भी मारो दोनों लगते हैं। मेरा आपका कुछ नहीं होता सब हमारा ही है भाई। ओ माय गॉड। हाँ मतलब दोनों बॉल को मार सकते हो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप अपना ही मार सकते हो। नीचे वाले प्लेयर अच्छा जी भाई इतने इतने अलग प्लेयर्स रखे भाई मैंने कैसे भाई। आई हैव स्किल इश्यूज इन दिस गेम। ऑनेस्टी के लिए अच्छा लगा भाई आपकी। नाइस ऑनेस्टी। यार बेचारी एम्बर मेरी कहीं पे तो यूज हो रही है। बीटीएस भाई बीटीएस भाई का सच में लैग हो रहा है पता है। दिख नहीं रहा मेरे को बंदा ही नहीं दिख रहा उनका। लाइक उनका बॉल आर पर जा रहा है उसके बाद उसका कोलाइड हो रहा है लाइक। अरे अच्छा ये बीटीएस भाई अच्छा मेरे को भी बीटीएस भाई मेरा भी हुआ आपका जैसा मेरा भी कंफ्यूजन हुआ। यार अभी यार दोनों ने एक जैसे ले लिया। पायरो पायरो वाले तो हो जाता है भाई कंफ्यूजन। पायरो और इलेक्ट्रो ले लिए दोनों ने भाई तो कंफ्यूजन हो रहा है भाई अभी तो। अभी हो रहा है बीटीएस भाई अभी हो रहा है। Off we go. बीटीएस भाई एक बॉल निकाल लो भाई आप। मैं तो बोलता हूँ अपने में से लुल। I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de टू 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 टू। आने दो भाई प्रीमोज आने दो। अच्छा जी कैरेक्टर्स ही सिलेक्ट करने हैं।
एम्बर एंड फिशल एंड ये एंड ओ इसमें 3 सिलेक्ट करने को मिलता है। नाइस वन। ये ले लेते हैं। डू यू नो सोनिक एंड गेंशिन कंट्रोवर्सी? नहीं भाई, ये सब तो नहीं पता मेरे को। कंट्रोवर्सी में पढ़ता ही नहीं भाई। डेंड्रो से कुछ नहीं होता पागल। बीटीएस भाई, कैसे गुंडा बनोगे रे आप? मिस हो गया। पर मेरी वॉल है ना बचाने के लिए, मेरी वॉल बचाएगी मेरे को। ओह, दोनों लग गए भाई। वॉल किधर है? व्हाट? वॉल नहीं दिखा। दोनों हक दिए। कुछ भी चल रहा है बे। BTS भाई। ये सिनर्जी आ रही है, सिनर्जी आ रही है, सिनर्जी आ रही है। अरे ये उल्टा होता तो इसको लग जाता। ओ लगा एक। बीटीएस भाई इसको तोड़ो। नाइस। चौड़ बे, इस बार तो क्या स्कोर मारा है। चौड़ 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 चौड़। 15,000, ऑलमोस्ट 16,000 मार दिया बे। I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. डिक्लाइन कर दिया बे भाई, मुंह पे डिक्लाइन किया बे। क्या हो गया बीटीएस भाई? किधर है बीटीएस भाई? अच्छा इधर ही घूम रहा है। बीटीएस भाई का नेट हक दिया मेरे को लग रहा है हल्का सा।
अरे गलती से यार, गलत कर दिया, गलत कर दिया। रख दिया, बच गए पर। बीटीएस भाई का बॉल, बीटीएस भाई बॉल छोड़ दो यार। बीटीएस भाई आपके ऊपर बॉल चिपका हुआ है, छोड़ दो उसको। ओ हक दिया दोनों ने। गाइस सिनर्जी टूट गई भाई, सिनर्जी टूट गई है। Adventure time. बीटीएस भाई का तो लैग सा हो रहा है हल्का सा। बीटीएस भाई क्या लैग से हो रहे हैं भाई। Adventure time. चॉट 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 चॉट। आ जाओ बीटीएस भाई, इधर वाली करते हैं अभी। ओह मागू कैंकी दे दिया बे इस बार तो। ये नहीं होता क्या? नाइस गेम प्ले ब्रो। एक्सप्रेस गेमिंग वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट्सएप, क्या हाल चाल? हेलो, थैंक यू वेरी मच। चुन 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 चुन। Boss break can summon multiple water kill। पता नहीं, बाढ़ में जाए भाई। Can't keep up with me. शेल क्रू। ये का मारा है भाई, मुंह पे मारा है एकदम। ओके, ओ तो ये होता है। क्वातीत ओ जो फास्ट निकला है भाई वो।
ओ भाई तगड़ा स्पीड हो गया भाई। ओ ओ भाई वो देख रहे हो पायरो वाला बॉल देखो तुम लोग खाली। ओ माय गॉड क्या डैमेज दिया है बे। ओ भाई 5 बॉल 4 बॉल कितने बॉल किधर किधर जाऊं रे पापा। मर गया। ओ भाई इजी इजी। ये देख के तो मुझे बचपन का गेम याद आ गया बॉल वाला। हाँ ना वो पिन बॉल टाइप का वो गेम रहता था ना भाई। फुल वैसा ही है बे। एंड 28। सब खरीद लूंगा आज तो मैं सब। आ जाने दो आने दो। सोल्ड आउट लेट्स गो। इवेंट को कर दिया खत्म। लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल ओजी टीम। I await your instruction. Sounds good to me. बेनेट। I won't hold you back. हेजो में क्या गड़बड़ी की थी मैंने। हेजो में आर्टिफैक्ट ये वाला चेंज किया था ना। वैसे ये भी सही है यार। 20 है भाई इसमें। अब 52 है पर इसमें 11% क्रिकेट था भाई। 60 हो गया ना। 60 एंड का वेपन में ये वेडनेसडे आएगा ना। ओके नेवर माइंड। ये मैंने वेस्ट कर दिया। अभी फिर से फार्म करना पड़ेगा ये। ऑल गुड। ओके सो गाइस आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे स्ट्रीम। आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली गाइस एंजॉय द स्ट्रीम। अगर आपको स्ट्रीम में मजा तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी गेंशिन इंपैक्ट की स्ट्रीम्स। बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम गुड नाइट बाय बाय सी यू सून गाइस। कल मिलते हैं बाय बाय।